समझ नहीं आई तो you can go back and forth. आप वहां से recorded से value को pick कर सकते हैं. Let this recording start properly. खैर ये मैंने जो कैलकुलेशन की है ये आपके साथ शीट शेयर भी हो जाएगा. ओके, नाउ रिकॉर्डेड हैज बीन स्टार्टेड. ओके, यहां तक तो समझ आ गई. इफ आई वांट टू फिक्स, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस ताकि यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. This yellow, the values in the yellow column, like in column A, those values which are in yellows, I am interested to multiply. For example, let me guide you properly. 2 multiply by 19 करना चाहता हूँ, and 2 multiply by 36 करना चाहता हूँ, and then I want 2 multiply by 53. And in other word, I want to fix the column A values and to multiply them with the rest of the columns values. So that we can do here, like in this sheet. Let me first on the top merge it. I'm merging it in center, fixing column A values in yellow and multiplying them with other column values. Right now, if you see, this cell is not sufficient for that text, so you can increase its from here. Double click, you can just make change. It's very large. Come back. Okay, manually you can do it. पहले मैंने आपको तरीका बताया था how to adjust cell sizes. So I have adjusted them. It's large, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया. So that you can fix. एक और तरीका भी है. I'm just showing you another command. For example, let me bring back to the original. In this case, the text what I have entered is not visible all. तो क्या कर सकते हैं हम? Just apply this command, wrap text. If you are following the cursor in this Excel sheet, press the wrap text and then double click the row, this line. Like if you are following the cursor, when this plus type symbol appears, double click this. So manually you can adjust. Now it has adjusted the text within that space which I have merged. ये to another row, to another column, it's not moving. आप देख रहे हैं इसमें एक ही उसमें adjust हुआ है. Right? So that can be done with the help of wrap text. अगर मैं दोबारा उसको कर लूं wrap text को, तो ये some of the text will disappear. Do it again and adjust from the row the size, so it will adjust your text above these calculation. Agar calculation are in very small space in terms of column, so you can adjust the text with the help of the wrap text command. Okay, like I have done here. Okay, now the question here, we are interested to fix the value in this column and to multiply with each B, C, D, E and F column values this A column value. So what I have done, मैंने किया equal. Let me delete all these values and do it again. Equal, and this cell reference. आपने value, you have, remember, you have not to put the value. You have to enter the cell reference. That you can do by going to that cell, or that you can even do manually from your keyboard. I'm just now entering A. If you can see, this cell is column A and row number 2, so it will become A2. Right? I have written manually from the keyboard. This is one way, and another way you can do it like just going to the cell that has been referred, and then function F4. It's fixed column in row, it's fixed row, and in this case it is fixed column. So I am interested to fix the column values, and
keep the rows open. It's because I want to multiply the next row with the next of the rest of the column rows. So that will be open. Just only I have fixed the column and kept the row open because the 2 is row, the A is column. So column has been fixed by this dollar symbol from function F4. Changing, you can do it. You can fix the row, you can fix the column, you can fix both, or you can open both. So these four options with that F4 are function F4 you can apply. Then static multiply in the next column in which 19 is the value, but we have to refer the cell number, not the value, because this is a formula, and this formula I want to copy to the other columns for C, D, E, and F. So if you have multiplied 19, then the formula will not copy. But if you have referred the cell, then formula will be copied. Now enter and first come down. What has been done here? It has multiplied all these values with their corresponding this B column value. And now we do what? All these value with the corresponding all these C value, all these D value, all these E, and all these F value. So that's simple. Select this and just drag to the right, and it will do your calculation within seconds. आपको वो manual calculation calculator और उससे जान छूट जाएगी. It's okay now. Yes, sir. And similarly, you can do if somebody is interested to fix the top column. For example, I'm changing the color. If this top column you want to fix and you want to multiply with the sorry, this top row I want to fix, and then we are interested to multiply the first row value with the other row's value. So yes, you can do that. Like follow me, equal this first row value, and now you have to fix the row. So how you will do function F4, both are now fixed. And now if you see a row 2 के सामने dollar symbol आ गया, so it means now row 2 we have fixed, multiply by the next row value and enter, and drag it to the last column, and then come down. ये count करने हैं आपने कि कितने 1 2 3 4 5 6 7. तो एक में हमने कैलकुलेशन की 6 को आपने ड्रैग करना है, सो इट विल मल्टीप्लाई these 7 arrows with the first arrow. Like एक कैलकुलेशन मैंने की and just drag it, it will do your calculation with the rest of the column. ये extra last वाला कर दिया, so you can delete it. How? ये outside from the row click कर लें and delete the extra column which has multiplied it with these like product. So मैंने हटा दिया. So this is another like fixing the row, right? And अगर यहाँ पे मैं लिखूं fixing one row and multiplying the values with other values in the rest of the rows, so that you can do from here. Column को भी fix कर सकते हैं, row को भी fix कर सकते हैं. If you just then see, let you just put it here. आप देखें E2 ऊपर वाला first row जो है वो fix है. E2 यहाँ पे देखें E2 fix in all cases. If you are just changing the rows, तो आपको top से formula bar में नजर आ रहा है यहाँ पे कि the row first value has been fixed, the other values are variable. So that we have done from Excel. Now this changing here, and you can see from the formula bar here that will show you that the first row has been fixed in this calculation. So this is what we can do in product. Okay, fixing the one row or fixing the one column value and multiplying with others. Even one value you can fix. For example, if somebody is interested only the value of this 2 in the first column, in the column A, this 2 is somebody is interested to multiply the value in this cell, I will say, not in this column or in this row. In this cell, like A2 cell value is interested to be multiplied with the rest of the value.
In that case, you will put what? If I'm doing here, equal this to cell and function f4 fix both column and row. तो आपकी ये एक वैल्यू फिक्स होगी, multiply with the next and enter and come down. So it's now multiplying this two. You can verify and then go to the right side for the other value. So in this case, it has multiplied 2 to all the rest of the value in column and in rows. इसने 2 को अगर जिस जगह पर भी आप क्लिक करेंगे A2 from the formula bar will be fixed. आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं anywhere you are clicking A2 is fixed. हर वैल्यू के साथ A2 fix है. Or when you are clicking on any cell, like I'm clicking double click here, and you will see A2 will be active and the cell with which it has been multiplied, that is showing in formula and also in the table for confirmation. So this is another way if you are interested to fix for example, this value you are changing. Okay, your formula has already been applied. मैं 10 कर रहा हूँ, all calculation will be changed accordingly. मैं इसको 100 कर रहा हूँ, you can see the right and all cells value are changing because formula is there. You want to write it 50, so accordingly your whole sheet wherever this cell is connected, that calculation automatically will be done. So this is the attraction and Microsoft Excel. ठीक है? Easy? Yes, sir. Okay, now one step forward. Trigonometry. You can see here in normal routine we have sine, cos, tangent, and then their inverses are utilized for calculation, and we have a concept of the radians and degrees. The first thing, I have already done this, I have already calculated the sheet, but for your understanding, I will repeat it. Let's see, I have, I'm developing this again, the, let me delete this column. What I'm doing, 0, 1, and then 360 तक मैं करना चाहता हूँ the degrees. So just hold on and you will see here figure is also moving with you. आपको show कर रहा है right side पे कि कितने पे आप जा रहे हैं, right? And we have a 360 degree. So the last one I have just leave it and it will automatically generate your 0, 0, 1. But first remember, you have to tell the Excel what interval you want to apply. तो मैंने 0 लिखा, 1 लिखा, तो it has been given a command. Excel को बताया गया कि मैं one step जो है वो change करना चाहता हूँ. So 1, 0 is necessary. Then drag it and it will do your job. Automatically it will generate the rest of the value instead of just entering it manually. No, don't enter it manually. Okay, that is the value in degrees. But if you want to change them, to convert them into radians, there is simple formula in Excel, equal, and just write radians. And if you see, a function automatically will also activate it. Double click it, right? And click the cell in which the value is entered in degrees, and you want to convert it into radians. Okay, but close and enter. So 0 degree is also equal to 0 radian, and then double click. After this plus symbol appears on this cell, it will give you the calculation for the rest of the angles into radians. So this is all. Now we can see up to 360 it has provided you the angles from degrees into radians, and you can reduce it to 2 decimal from here. Like you can increase the number of decimal, you can decrease the number of decimal. So let me decrease it to decimal, 2 decimal. Okay, that's it. Now remember, in Excel, when we are entering the sine formula, so in that we need the radian value. Otherwise, the result will be wrong.
when you are writing, for example, sine and bracket start, and then the number are the value for which you are interested to find the sine. So this value, okay, in this specific case 0 0, but it's not the proper way in Excel. Excel में आपने क्या करना है? The degree is first to be converted into radian, then radian value sine will be just found, that will give you the proper result. How? For example, I'm just doing this calculation based on the value in degrees. Sine, bracket start, and the value in this column which are in degrees, bracket close, enter, and then drag it or copy formula by just putting your cursor here. When this plus symbol appears, double click it, and you will find the rest of the value. अब आपको पता होगा कि sin 30 is equal to what? sin 30 किसके बराबर है? Anyone please? Hello? 0.707. sin 30 किसके? 0.705. 707. 0.5 के बराबर नहीं है? Yes sir, 0.5. वो 45.707. हाँ, तो जरा देखिए, एक कंफर्मेशन आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं कि ये 30 डिग्री एंगल है, इज हियर 0.5 नहीं है. तो इट मींस एक्सेल में डिग्रीज जो आप लिखते हैं या डिग्री वाला, दैट विल नॉट डू योर प्रॉपर कैलकुलेशन. फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियन, and then radian column should be calculated from sine function. That will give you the proper value. How? Let me do it again. I'm just clicking here, और ये J2 जो मैंने दिया है, मैं अब K2 इसको दे रहा हूँ, K यहाँ से चेंज कर रहा हूँ ताकि those value which I have converted from degrees into radian, that cell should be referred. Enter, and then copy the formula down and bring it to do 2 decimal point. From here, decrease decimal, centralize the value, and now for confirmation from your calculator for any value you can find, or if you remember for 30, so you can come here and you will have the confirmation. Yes, sine 30 is equal to 0.5. So what I mean, keep in mind the degree value in Excel first needs to be converted into radian, and then the radian column value should be applied with the sine function in Excel, then that will give you the proper value. Direct formula में क्या करूंगा यहाँ पे, let me just generate one column, insert a column. The same thing directly. यहाँ पे तो first I have converted into radian. By directly by formula, how I can do it? Equal sine, bracket start, and after bracket start I'm writing radians. Command, within the command I'm applying the sine, then bracket start, then I have written radians, then again bracket start, and the degree cell now can be clicked, bracket close, another bracket close, because we have started 2 bracket, so 2 bracket must be closed, and enter. And now double click it, and you will see now your calculation is exactly what you have found under the sine with the radian values. Here I have applied the function within the function. मैंने sine भी find किया, लेकिन sine find करने के लिए first I have converted the degrees into radians within one formula. So you can do it like in this way. ठीक है? ये डायरेक्ट आपको समझ नहीं आती तो you can apply first, change the degrees into radian, then in next column apply the sine on the radian value. You will get the proper sine. And the same you have to apply for the cos, tangent, secant, cosecant. इसी तरह का है. इस तरह देखिए, equal cos, bracket start, radian में आपने convert किया, उसको refer करना है, and bracket close, enter. Cos 0 आपका 1 के बराबर, yes, ये confirmation भी आप कर सकते calculate से, and double click, and it will calculate all of your value from 0 to 360. 2 decimal पे लेके आए. ठीक है, अगर 2 decimal पे ये आपको राउंड ज्यादा दे रहा है तो उसको ज्यादा कर लें ताकि थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो, because this is rounding. When you are decreasing the decimal point, it is rounding the values.
तो कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये 0 पे भी 1 दे रहा है, 1 पे भी 1 दे रहा है फॉर 2 decimal, लाइक यू कैन सी हियर। अगर थोड़ा मैं ये कर लूं तो ये आपको लाइक 5 तक जो है 1 शो कर रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ राउंडिंग द वैल्यू। So if you increase the decimal value, then you can properly identify the different values for 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. And similarly, you can apply equal 10 and the value which we have converted into reading, enter and double click. It will give you all values from 0 to 360, right? And if you remember, secant वो डायरेक्ट है उसमें फंक्शन secant लिखे equal secant sec and then the value in radian. Okay, enter and double click. It will calculate the values and secant from 0 to you can say up to 360. But there is no direct function in we can say cosecant. But we remember that cosecant is the reciprocal of sine. So simply what we can do, 1 divided by what calculation we have done for the sine angle, उसको रेफर कर लें. Like in this case, L में आपका sine function है. And enter and double click, it will give you the cosecant values. फर्स्ट कॉलम में जो आपको नजर आ रहा है, बिकॉज ये होगा 1 divided by 0, so 1 divided by 0 is undefined. Infinity जो आप कहते हैं, undefined के लिए आपको the Excel will give you this symbol, right? ये जो dev divided by 0 मतलब जो आपने divide किया है 0 पे, तो something divided by 0 is undefined, so that's why it's showing you this type of error, something divided by 0. The same you can do cotangent. You have the formula for the cotangent in Excel, cot formula hai, and come to the radian value which you have changed from degree and enter and double click. जहां पे आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, div divided by 0 दे रहा है, it means that is undefined. Something divided by 0 is undefined. That's why Excel is also not showing. So this is what we can do. Trigonometric calculation in Excel. किसी भी फार्मूला में आपको जरूरत पड़ी, so you will do this kind of interpretation and those calculation. Up till now, everybody is okay? Yes, sir. Okay, let's go forward. यहाँ पे just a simple calculation I have just done for like daily wages. For example, some of the worker are working in a company and you want to build an Excel sheet for them. You're just changing the value accordingly, it will give you the wages. आपको value आएगी. I have complete explanation नीचे मैंने की कि how you have to do this calculation, but practically I'm just showing you here. For example, randomly I have generated the names Ali, Kamran, Murad, Hussein, Ghulam, and whatever, like some number of the employees I have entered. The first thing, what is the formula which can give you the number of employees? Okay, it's easy. एक तरीका ये है, just in the first column in which the employee name is there, and then drag, sorry, not drag, just select all rows in which the employees are there, and you will see here in Excel sheet, if you are following the cursor, I'm showing count, यहाँ पे लिखा होगा count 11. So it means your number of employees are 11. एक ये तरीका है कि selection के बाद you can see how many cells you have selected. So I have selected only those cells in which the employees' names are available. So it will show me the total count. If I'm selecting others with this, then it will show the selected number of, you can see rows, right? They are summing the values now here. Counting me 77 count के ये value जो आपने select की है ये अभी 77 है. लेकिन from here just only I can understand how many numbers of the employees are there. Excel किस तरह आपको देगा?
टेक्स्ट डायरेक्टली काउंट आपको नहीं देगा. So the next column of the implies in which some numerical values are available, you can apply a formula equal count bracket start and select the column in which values are available in front of the employees and bracket close enter. It will count the number of employees. Yeah, if straightforward from the column in which the names and text are entered and you are interested to straightforward count from there, तो उसके लिए थोड़ा फिर फार्मूला चेंज करना पड़ेगा. किस तरह करना पड़ेगा? I'm just repeating the formula equal count bracket start with the shift 9 and then what I'm writing from where it has been started from row number A6, then semicolon and row number आपका है A16 and it has automatically selected the range. और आप इस तरह भी कर सकते हैं, you have count and select the employees in which you are interested to count them. Maybe in an Excel sheet you have 1,000 employees and you want to imply or want to count them by Excel formula. You have done that. You have selected the range, then comma, then shift और आपका ये सेमीकोलन और कॉलन के राइट साइड पे एक बटन है जिसपे कॉमा भी लिखा है, डबल कॉमा भी लिखा है, तो शिफ्ट और डबल कॉमा आ जाएगा, then steric and then shift वो डबल कॉमा वाला and bracket close and it will sorry this is okay sorry ये count F है, चूंकि टेक्स्ट है तो थोड़ा सा हमारा ये काउंट प्रॉपर काउंट F है. तो काउंट F सेलेक्टिंग द रेंज कॉमा शिफ्ट डबल कॉमा के साथ आ जाएगा, स्टेरिक देन शिफ्ट डबल कॉमा आपके कीबोर्ड में होगा, सिंगल कॉमा डबल कॉमा एक बटन पे है, तो डबल कॉमा विल कम विद द हेल्प ऑफ द शिफ्ट की, press shift key and double comma will come and then enter. So it will count the text which you have entered in different rows for your employees. So text counting is with the help of count F formula, not straightforward count. Numerical values can be counted in any cell with the help of straightforward count. मैंने जो पहले आपको बता दिया, दोबारा मैं कर रहा हूं count और आपको you can count only this cell, this column, 11 value, and you can count any number of value. For example, I'm interested in all values. I'm writing count and all these numerical values starting from like a specific cell to another specific and enter. It will count you all numbers कि ये इतने cells जो है आपने select किए हैं जिसमें data है, right? So we are not interested in all these now. We are interested only in those in which the employee's name are there. So with text, you have to apply the formula. I have already done it here. Count F formula उसके लिए होगा. Range select करना होगा, comma, double comma, steric, again double comma, bracket close, enter. It will count with text the cells. Okay. Next, what we do? Monday, Tuesday, and weekly basis. You can do it on monthly basis, annual basis. Just an example. In each day, you are just expecting an employee to work for 8 hours. So 8 hours are here. It might be some hour have been changed. किसी ने overtime लगा दिया, 14 घंटे ड्यूटी की, किसी ने की ही नहीं है, 000. You can change later on, but once you have developed your sheet, then changing any value automatically your calculation will be available on the right side. First, what we are doing, total hours हम कर लेते हैं. Right? और यहां से मैं खत्म कर रहा हूं पहले. For all employees, you can have summation now is clear to everyone. अगर मैं दोबारा ये खत्म भी कर रहा हूं और आपको शो करने के लिए what I'm doing here. On one side, if I'm interested to find all employees total hours for a day, so simple equal sum. और आप ऊपर से जाएं, सिलेक्शन शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, माउस से, एंड एंटर. दिस इज समेशन एंड ड्रैग दिस फर्स्ट कॉलम समेशन टू द फ्राइडे. It will calculate the number of hours in an individual day by all employees.
If I want to find the average of these employees of a day, so write average, select these hours to the last employee, enter. It will give you the average hours of that day for all employees, and then drag it. It will copy the formula for other days averages. Okay. Similarly, for 1 week from Monday to Friday, this employee total hours can be just summed here, sum, and then select all these. In this case, if you are not writing another formula to the right side, even without bracket, you will enter automatically. It will put the bracket. Okay, you see bracket has been just put it by X, and drag it to the down. So it will give you this horizontal summation for all cell. Now, for example, daily wages of different employees, आप रोजाना के बेस पर आवर उसको कितने पैसे दे रहे हैं, rupees per hour. So these are their total hours and rupees per hour of an individual employee. There may be variable, कोई एक पोजीशन पे होगा, कोई दूसरी पोजीशन पे होगा. So accordingly, as an example, I have different values. Hour base value 100 रुपए ले रहा है, 200 रुपए ले रहा है. डॉक्टर है, शायद वो अब एक पेशेंट की मिसाल ले सकते हैं कि पर पेशेंट ही इज गेटिंग 1000 रुपीज. सो यू कैन डू दैट कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली. आप उसको चेंज कर सकते हैं. सिंपल इज दैट नाउ कि 40 hours of the week of an employee. Okay, so how per hour 40 hours के बेस पे, तो simply 40 this cell multiply with is rupees per hour and enter, and then drag it from here to the last employee. It will calculate for all employees according to their total number of hours and according to their rate per hour. Your calculation is there, and you can sum all employees for that week. You can find the average of all employees for that week. ठीक है, वो यहाँ पे मैंने किया है. If you want to apply the same command for the wages, तमाम employees का total एक week का जो नंबर रुपीस पर आवर है वो कितने आ रहे हैं, एवरेज कितने आ रहे हैं of the all employees, so that all calculation you can do easy. Once you have developed this type of sheet, then next time you can do any changes in these part of the cell. उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरह लॉक करना है आपने. For example, if you are interested to not let somebody to change these formulas जो आपने अप्लाई किए हैं, वो किस तरह आपने लॉक करने हैं, और बाकी आपने अलाउ करना है कि ये सिर्फ चेंज कर लें कोई, राइट. सो आई विल शो यू आल्सो दैट कमांड. ओके, मैं बाद में आपको बता रहा हूँ. सिंपल जस्ट यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं कि अगर मंडे को उसने 6 किया, सो द राइट साइड पर ऑटोमेटिकली दिस पार्ट and the rest other calculation will show you changes. If I delete it, okay, so everything will be 0. This wage is variable, इसलिए कि आप change कर सकते हैं. Now any value you are putting here कि वो कितना काम कर रहा है, ठीक है. तो जब आप जो आप करते जाएंगे, your formula is there, accordingly calculation will be started. वो आप कोई भी मतलब value दे सकते हैं, वो calculation वहां पे होती रहेगी. ठीक है, I'm just filling it randomly, so those calculation will be available, right? So let me go back to the original what we have the example with Control Z. It's the same command like in Word. So this is a simple calculation. You can do it for anything, right? This is I have just taken for daily wages just to show you or to demonstrate you how you have to apply different formulas. Okay. Next is developing a graph or creating a graph in Microsoft Excel. We have different other tools which can create very good graphs, but for the beginners, like for the student, when we are just learning the Excel, how can we develop graph in Microsoft Excel? So that I will show you from here. So an example data I have entered for rainfall in millimeter in different months of the year from January to December for Peshawar, Islamabad, Lahore, and Karachi. This is just an example data. It's not like actual data. It's आप कोई भी डेटा यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, accordingly आपका ग्राफ खुद पर चेंज होगा. But once you need to develop it, तो खुद कैसे चेंज होगा later on I will show you. लेकिन let me first the data you have entered. अब ये तो मैंने एक्सरसाइज
किया है, the same I'm just going to develop for you people, just demonstrate for demonstration purpose and for your learning purpose. How can we change it? Select from top, just follow me. From top, I have selected all columns which I want to draw in Excel, like the figure which I have already drawn. And go to the insert and come to the different option available in Excel. These are the line option, 2Ds and 3Ds. You can just follow, right? I'm just changing here, and you will see some of the option or one of the option I have already, like in this case, this line diagram, okay? And in this line diagram, different line diagram are available. Let first click one just to start with. ये एक rough सा generate हो गया. After what? After selecting from top all columns in which data is available, and then go to insert, and from insert I have taken the line diagram. From the top, remove this chart title. Chart title automatically will come below the table. Figure हम लिख लेते हैं, उसके मुताबिक फिर ये figure क्या show कर रहा है, that can show us. Okay. Now you can see there is the difference between these two figures, but I want to apply some makeup to develop this figure like what I have created earlier. The first thing, I want to shift these legends. इसको कहते हैं legends, जो यहाँ पे show कर रहा है पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची. A particular type of color is showing in this graph, and that is visible कि आपका blue क्या show कर रहा है पेशावर, आपका इस्लामाबाद जो orange, फिर these you can change later on, okay? But if you want to just reduce the cost of the print, because color print will be very much costly than the black and white, तो उसके लिए हम line के मुख्तलिफ किस्म के pattern apply करते हैं, some dotted, some line, solid line, some different other dots, so that one can be identified from other. एक जैसे अगर हो तो फिर पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा कलर किसको represent कर रहा है, what type of the line is representing which data. Before anything, I'm just right clicking on these legends and format legend, click, and from the right menu you can see ये पेन ओपन हुआ. थोड़ा सा मैं वाइट कर लेता हूँ इसको, और ये फिगर को थोड़ा सा मैं ड्रैग कर लेता हूँ इस साइड पे. इसको मैं थोड़ा सा उस साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो what I'm doing different function. See, now again I'm doing click on these legends. जब आप इस पे कर्सर थोड़ा सा होल्ड भी कर ले, नीचे आपको बताएगा legends entry. Right click on it, click on format legend, and click from here this right pane top. So the legends automatically will go to the top of the figure. You can bring it bottom, you can show it on the left, you can show on the right, you can show top right, and you can, again, I'm interested now in top because that is possibly a good position. Even manually I can then move it, I can have some adjustment manually, but for the time being, by default it has set legends on the top of this figure. Okay, next is the axis values are not visible. So I will come to this plus symbol, click it, and click on chart axis. It has now developed some by default axis title. Right here I'm interested to write month of the year, so I have written month of the year, and here is the rainfall in millimeter. Click it, select it, rainfall, and in comma millimeter. I have also written a little bit. You can adjust these spacing from here manually. After this plus symbol appears, you can see how I'm just changing or adjusting the space from the axis value. Okay,
so far we have done. Another thing, in the start these values are very dark black, but in this case we have different entries very gray type. Why? Because here the color is something else. So from the outside border, if it is not, click the outside border and come here and click on the black and white or the black color. Now you can see the difference, color change हो गया आपके text का. And from here make it Time New Romans, and if you are interested to increase to 11 or 12, so you can do from there, but here for different I'm just writing 10 ताकि थोड़ा सा अच्छा नजर आए. You can increase the graph from this corner, okay, the size if you are interested. Otherwise no problem, go back, उसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, right? Now next is, we cannot see a line which has been drawn here and which has been drawn on ordinate. इस तरह black line और इस तरह के ये जो spikes हैं हमें नजर नहीं आते, जो marks हम क्या tick marks जिसको कहते हैं. How can we do that? That's simple. First I'm clicking on the ordinate value. You have to click on this ordinate value, okay? Then come here, right side panel, click on this line and click on the solid, right? And a little bit I'm increasing this pane, and now you can see here a color which is blue, I'm making it black, and this width I'm just making 1, okay? And now you can see here the line in black has been drawn. Similarly, click on this x-axis and this pane is already open. Click on solid. Solid, automatically I have changed already in black, and this width make it 1 from here, right? Now that line is also available. Now these spikes are, these tick marks are not visible. For tick marks, go to these bar symbol जो कि X is option आपको show करे, click on it, and here is written tick marks. Click on tick marks, and here is major type. So major type is by default none. Click on outside. Now you can see spikes are, these tick marks are now available. The same, you just go to the other axis, click on that, and this menu is already open. Under the tick marks, click on the outside. Inside up karenge, so these tick marks will be inside. So that we have done. So yes, okay, this kind of like axis with the tick marks now available. Now next is, inside the figure we have the grid lines, the line, horizontal line. Click on any one line inside these this graph. I'm just clicking, you can just follow the cursor, any one line pe jaye and click that, and from your keyboard press delete. You have very clean area for your figure. तो थोड़ा सा मेकअप अच्छा हो गया. अब देखें एक अच्छा हो रहा है, like you, somebody specifically these females, they understand very well. जब वो पार्लर पे जाती हैं तो किस तरह एक शेप से दूसरे शेप में वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें वो लगा के करें. So that same thing we are doing in Excel. Now, how to bring these type of like lines with these specific we can say symbols. Now for Peshawar we have the bold solid line, and if we see from here Peshawar kaun sa line show kare, the blue line. So what I'm doing, I'm bringing the cursor to the blue line and double click it, right? Again I'm repeating, just clicking outside this figure, coming back, double click on this blue line. But remember, the function will be activated if all lines shows you different dots, like you can see these 4 dots. Sometime you are clicking wrongly. Wrongly क्या होगा मैं आपको show करता हूँ. एक show होगा, ये देखें. This is, I have clicked on the blue line, but only one point is showing that you have applied some command. In this case, this click is wrong.
How you can make it correct? Come out anywhere, एक स्पेस किसी ओपन जगह पे क्लिक कर लें and come back to this line and click on it. If this kind of like click 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 showing you different symbols at different ways, complete line is clicked, this is the right command you have applied to change now this line. Okay, from where I can change again, come to this color box, click, the line is now visible. Under the line, click on solid, automatically black ho gaya. The width is more, width can be reduced from here. Okay, 1.7 तक मैंने कर लिया, 1.75, and this is not looking smooth, थोड़े से spike नजर आते हैं. This figure, this is smooth. From where I have to make it smooth, just click on these series options. Sorry, यही box पे click रहने दे and go down, and here is the option smooth line. यही box पे आपका click रहने दे and come down and click in this smooth line. Now you can see your line is according to what I have already prepared, and you can see in legend automatically its color has also been changed. Next, Islamabad ke liye you can see what type of line I have used, and in this case Islamabad is with a kind of like orange color. So go to the line, orange color has been clicked, come back to this color bin. First I'm making it smooth, okay, smooth, and go up, change the width size a little bit. I have reduced to, आप थोड़ा सा अगर ज्यादा करें no problem 2 तक रखें, कम भी कर सकते हैं, and then change color to black from here and come down for the dash type. You can see dash type is written here. So dash type यहाँ पे जो भी मैंने इस फिगर में अप्लाई किया, I'm applying this. I think, let me check, not this one. You can apply any one, but specifically not, yes, this one. This is what I have applied for the previous. So it might be another one. Let me check. हाँ यही है, उसमें थोड़ा सा फिगर लार्ज है. You can apply anyone, लेकिन different होना चाहिए from others. Now this solid line and this dotted line, they can have a clear difference between each other to identify from one another. Next line, small dots for Lahore. So C for Lahore is gray lines. Click it and solid line कर लें, black हो गया automatically, and I'm reducing the size of the line. Come to these dot dash type, and these dotted have been selected. Now अगर ये proper dots नहीं है, you can apply the other, increase the size. Yes, this one might be, you can apply. So now this is for Lahore. For Karachi, here is another like symbol. So Karachi here is now light orange. Click on the line which represent here from the legend Karachi. Change to solid line. Black automatically ho gaya. You can change the size. I'm a little bit reducing. Okay. Change from here the dash type. This one, which is one solid, then dot, then solid. ये भी कर सकते हैं आप, कुछ और भी कर सकते हैं, but this we have applied just for difference. Now you can see the one which I have created earlier, a similar kind of figure you have created here. उसमें थोड़ा सा size ज्यादा है text का. Yes, you can do it from home, but when click on the outside and then 12, and you can see whatever you have in the previous figure, a similar type of situation you have now, and your this figure one by one, step by step I have shown you how to develop a figure in Excel and how to do makeup for that figure, right? You can draw a figure different this line figure. ये तो line मैंने पहले डेवलप किया था, एक मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके आपको डेवलप किया. थोड़ा सा मैं नीचे इसको ड्रैग कर रहा हूं, ये दोनों यहाँ पे पहले वाला और ये वाला आपका. अब somebody is interested to draw
this data in a bar type chart, not like this is line type. So yes, you can do it. Insert, go to these bars and click on any like bar. The first one I'm clicking and it has produced this bar chart. ये देखें, now हर महीने के लिए ये डेटा आपको अलग अलग दे रहा है. जनवरी के लिए ये आपको चारों स्टेशन का, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, you can see from here. February के लिए चारों स्टेशन का डेटा. This is a good comparison. Okay, means for 4 like station side by side with the help of these bar charts. वहां पर भी आप कर सकते for January, but here from the lines. Okay, यहाँ से आप कर सकते हैं. But here straight forward like exactly आपको show करेगा कि from the ordinates how it can be represented. तो ये अब बार चार्ट में ड्रा हो गया. नीचे लाइन वाला जो था ऑटोमेटिकली ये अभी मैंने बार चार्ट में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, कंट्रोल Z कर लें, ये वापस अपने जिस तरह पहले मैंने ड्रॉ किया था उसी फॉर्म में ये चला जाएगा. ठीक है, तो दैट बार चार्ट यू कैन डू एंड द कलर ऑफ दैट बार चार्ट यू कैन चेंज. इसको मैं नीचे चढ़ रहा हूं आपके लिए, इसको दोबारा मैं डेवलप कर रहा हूं. इंसर्ट, ये ऐसा ना हो कि उसको खत्म कर दें. ये मैंने अलग डेवलप किया, नीचे वाला अपनी जगह है. इसकी थोड़ी सी मेकअप आप कर सकते हैं इफ यू वांट. चार्ट टाइटल को यहां से नीचे अपने फिगर में शो करना है, जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हियर. एंड द सेम थिंग लाइक यू कैन रिपीट, आई हैव शोन यू. ये लाइंस पे मैंने क्लिक किया, रिमूव हो गए. द ऑर्डिनेट वैल्यू पे मैंने क्लिक किया, सॉलिड लाइन पे जाएं, मेक इट 1, मेक इट ब्लैक इफ इट इज नॉट ब्लैक, एंड इस टेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएं. टिक मार्क्स on the outside. Okay, do it also for the x-axis. Outside text, come to this color box, the line solid, this is gray type, make it black, and from here width make it 1, right? And click on the outside box like outside line. In the start you can do it, click on this, make it black. Yes, now it is black. If you are interested to show these legend on the top, right click on it. First click through the mouse, left click and right click them, and format legend, and click on top. Your legends will be on top. You can manually a little bit adjust it. Again, I'm clicking on the outside border, not inside the border, outside the border, and family Romans, right? And if you are interested to make it large, 12 or 11 or whatever, you can do it. I have changed to 12, and then click on this plus symbol and axis value. This will give you month of the year, and you can write here, double click, this you can delete even from your keyboard. यहाँ लिखिए rainfall, आपका कुछ भी हो सकता है. You can, a little bit space can be adjusted from here. Okay, and now this is bar chart for the same data. You can find or you can draw different others. So for each month of the 4 station, it is side by side showing you the comparison. Now it's up to you to change the color of these bars or leave it. मैं थोड़ा सा large कर लूँ size को for demonstration. आप कम ज़्यादा कर सकते हैं from these corner. अच्छा, कर मैं क्या रहा हूँ? Just you can see Peshawar is with the blue color. If I want to change these colors into patterns, how we can do it? Let me show you. Double click on the Peshawar symbols जो कि blue color. सिर्फ Peshawar पे मैंने click किया. And now you can see here, click on this color box, and first make it solid line. Solid line क्या करना है हमने? We have to draw the
external lines, or we can say the box line, जो कि इसके border हैं ये graph के, in bar के, that I want in black, जो border है यहाँ पे लिखें border, मैं 1 करना चाहता हूँ. Okay, first I have done that there. Then from where the pattern can be drawn, you see, I'm just clicking it back. यहाँ पे border के ऊपर fill है, just click on fill and come down, नीचे लिखा है pattern, just click on pattern and different patterns are now visible, and click on one pattern in which you are interested and change the color of the pattern from downside. यहाँ पे let me show you, थोड़ा सा मैं इसको drag करूँ, ये pen I'm just expanding from here. Okay, now you can see here the color and make it black. So now you can see in the figure the pattern of the Peshawar has been changed for all months. Click on the next column for Islamabad. One click is okay, double click भी हो सकता है, one click भी हो सकता है, but make sure that all bars are now clicked. Like in the line diagram, sometime if only one bar is clicked for Islamabad, then that will be wrong. कभी कभार हो जाए. Now see in this case, only one bar above the march is clicked and other bars for Islamabad are not clicked. So click on any open space and then again click here and see that all bars for all months for Islamabad are now highlighted. Go back and under that fill, first क्या करें, border solid कर लें और उसको black कर लें, and from here 1, ये आपका external जो line है ये dark कर गया, 1 and black कर देगा जो line है external इस bar के. And inside I'm interested in a pattern, so under fill click on pattern and different pattern is to be selected here. For example, I'm selected this one so that we can identify one column for Peshawar to the other column for Islamabad and Lahore and Karachi. And similarly, I'm doing it for Lahore now. Just quickly, now you have got it from where I'm doing it. Solid, black, 1, I have changed the border color, and from here pattern, another third different pattern. I'm just selecting from here, and you can see in the graph I'm doing the same for Karachi to change it in pattern instead of this color, because again I will repeat, color prints are more expensive, so that's why we are changing it into black and white. And in black and white, how we will differentiate one station data from other with the help of these patterns. Solid border with 1 width and then pattern pe click करें and then a 4th pattern so that we can differentiate it from others. Like you can see, anyone, different patterns you can select from here. I'm just applying different patterns. आप अपनी मर्जी का यहाँ पे कर सकते हैं, but that should be not very close to the previous one. थोड़ा सा आपने इसमें workout करना है. Okay, so this what I have just done, different patterns in the bar chart. तो आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं डेटा. And now you can also, if these values like in the x-axis, this January, February and March, you want to change the angle of them, इसकी orientation को अगर आप change करना चाहते हैं तो double click on it, and from where you can do it, let me see these labels. और labels पे अगर आप देख लें, ये low है, ये high है, ये ऊपर भी आपको show कर सकते हैं with high, but in this case we are not interested, we are interested in low, or you can write next to axis. But this is another command, like to shift the axis labels to top or to the bottom, that you can do from here. Let me find जो orientation की बात मैंने आपको की वो कहाँ से हम कर सकते हैं.
alignment, ये तो position है, text direction, yes, sorry, यहाँ पे है. You can see this box here in Excel in between these x-axis or ये जो effects है you can apply on different text and so this size and properties, if you hold your cursor on it, from here text direction यहाँ पे horizontal है, you can change it like आप vertical बना सकते हैं. Now you can see in this figure January, February, March, April, अगर इस तरह अच्छा look आपको दे रहा है in the space is not a problem, so you can change it from here. Otherwise you can make it stack तो अच्छा नहीं होता, ये proper है ही नहीं. Rotate to 270 ये आप कर सकते हैं, ठीक है. एंड हॉरिजॉन्टल वापस आप ला सकते हैं. ये देखें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हुआ, लेकिन इसमें दरमियान में बाज मंथ नजर नहीं आते. क्यों? बिकॉज टेक्स्ट कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इफ यू increase the length of the graph. What I'm doing from here, like you can follow the cursor जो मैं कर रहा हूं, then possibly your other months will also be visible like I'm doing here. Now you can see other months. But if the space in your you are copying this figure from here and you are pasting in your PowerPoint or in Word, then this much large size might not be feasible. अगर ठीक है ये हो रहा है वहां पे adjust हो रहा है, then okay. Otherwise, reduce the size of the graph and click on these x-axis labels. Double click on it so that this right pane can be visible. Come to this axis and size and properties. एंड हॉरिजॉन्टल की बजाय ये 270 पे रोटेट कर ले और 90 पे रोटेट कर ले, ठीक है. सो दे विल गिव यू लाइक इन स्मॉल स्पेस ऑल वैल्यूज. ये अब तमाम नजर आ रहे हैं जो कि हॉरिजॉन्टल में तमाम नजर नहीं आ रहे. तो दैट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट यू कैन डू फ्रॉम लाइक टेक्स्ट इफेक्ट, हॉरिजॉन्टल, 270, 90, वर्टिकल. दैट एडजस्टमेंट इज पॉसिबल इन एक्सेल, राइट. अच्छा, यहाँ पे लेजेंड जो है इसके स्पेसिंग को आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं as I have done from here. अगर आप कहते हैं कि पूरे इस ग्राफ साइज के मुताबिक I want to extend it, do it. Space आपको ज्यादा मिल जाएगी, so that you can do from here. So this is like different type of graphs you can draw, and Microsoft Excel very much like for the beginner it will be good. Otherwise we can use different other software for drawing different graphs. यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं आप लोग? यस सर. अच्छा, अनम आपको समझ आ रही है? मलाइका, किरामत, ये बाकी जो है शफी, द रेस्ट ऑफ सुहेब. यस सर. ओके, सो फॉर एवरीबॉडी इज ओके. अच्छा, इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स यू विल प्ले अराउंड. आप ड्रा कर सकते हैं एनी ऑटोमेटिकली. ये जो अगर आपने ड्रा किया और इसी में आप चेंज करना चाहते हैं, तो जस्ट क्लिक ऑन द विंडो and you have here change type, chart type. Click कर लें इस पे and you will see different option from this left pane. So for this particular type of data, if a type of graph can be applied, that you can change from here. Like मैं line पे कर लेता हूं, तो line diagram यहाँ पे different option are available. Okay, and click it, your current graph will be changed to line diagram. ये देखें लाइन पे एक क्लिक के साथ जो है वो चेंज हो गया. I'm just bringing it back to Control Z. वापस अपनी इतनी ख्वारी हमने की है. Just for example मैं शो करूं. Click on this change chart type, ठीक है. और आप यहाँ पे pie chart, you can show your data if you can. This is with the help of pie chart. Individual month के लिए जुलाई, अगस्त, ये पैटर्न है, इसलिए अब कलर में अगर आप कर लें तो कलर में आपको ये थोड़ा फिर अच्छा नजर आएगा. लाइक आई एम डूइंग इट हियर, राइट. ये डिफरेंट मंथ्स के लिए आपको डिफरेंट स्टेशन के यहाँ पे मंथ्स लेजेंड शो हो रहे हैं, राइट. इवन यू कैन शो हियर ऑन द फिगर. ये यहाँ से आप मुख्तलिफ ऑप्शन विल बी अवेलेबल, राइट. आपको यहाँ से मंथ वाइज जो है वो डेटा शो करेगा. तो दैट यू कैन डू इन एक्सेल फ्रॉम द चेंज टाइप. हम कंट्रोल Z, मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ.
Okay, you can have other charts if they are applicable here. Surface type है यहाँ पे, आप इसी डेटा को surface type में convert कर सकते हैं. Like you can play around these graphs, right? कलर में आप चेंज कर लें तो फिर आपको विजिबिलिटी ज्यादा होगी. डिफरेंट मंथ्स के लिए और डिफरेंट रेंजेस ऑफ द डेटा के लिए ये ड्रॉ हुआ. बट सम ग्राफ आर नॉट वेरी फिजिबल फॉर सम सॉर्ट ऑफ डेटा. अब इस टाइप के डेटा के लिए या तो ये कॉलम, ये चार्ट टाइप, सॉरी bar type or line type, they are more feasible, two types of graphs. Or in some cases pie chart etc. you can draw. So from these chart type you can have different type of charts application. और यहाँ पे कलर इफेक्ट से आप डिफरेंट कलर पैटर्न जो है उसके ले सकते हैं. जिस तरह इनिशियली ये बाय डिफॉल्ट कुछ कलर के साथ ड्रॉ हुआ, सो दोस कलर यू कैन चेंज ओके फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस कलर इफेक्ट, राइट. आप मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशन यहाँ पे ला सकते हैं, राइट. Yes, but here we are not interested in color, so that's why I have just exercised or demonstrated in patterns. चल लेआउट में आप मुख्तलिफ किस्म के लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने अगर डेटा भी आपने टेबल में शो करना है, बट इट्स नॉट कॉमन, डेटा शो करने की जरूरत नहीं है, वो डुप्लीकेशन हो जाएगी. बिकॉज शो द डेटा आइदर इन टेबल और इन ग्राफ, एक चीज होनी चाहिए, दोनों को एट अ टाइम ना करें, ये डुप्लीकेशन हो जाता है जिस तरह के इस टाइप में हो रहा है. तो यहां से वो मुख्तलिफ किस्म के वो इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको मैनुअली बता के दिया दैट इज द प्रॉपर सेट कंडीशन, आपने उस तरह करना है. यहां से बड़ी वेरिएशन आपको मिल सकती है, राइट. कहीं पे डेटा भी आपके साथ शो हो रहा है, वैल्यूज भी शो हो रही हैं, राइट. बट वी नीड दिस काइंड ऑफ figure like I have shown you from this situation, from this specific case, right? अच्छा, ग्राफ वाला क्लियर हो गया. अब मैं चाहता हूं, फॉर एग्जांपल इन सम केसेस यू आर इंटरेस्टेड टू ड्रॉ डेटा ऑन टू एक्सिस. लेफ्ट साइड पे भी मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, राइट साइड पे भी मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, टू वर्टिकल एक्सिस और ऑर्डिनेट्स, लाइक यू कैन सी in this next example. And when we need it, sometime in one column the data is very small and another column the data is very large. So if we draw it on the same column, that will be very much problematic for us. वो हमारे लिए, like you can see in this figure, the left side data is large comparatively than the data which has been drawn on the right side column ordinate. That is from -2 to 5, and on the left side this is from 0 to 100. So if we are also drawing this right side column along with this left side, so the data will be something different. I will show you now practically. Let me, ये डेटा randomly मैंने यहाँ पे एंट्री की है, एक रेडीमेड शीट से मुझे डेटा मिला. Let's do, how can we do it? Select, I want to draw these dates on which this specific flood has been occurred. Bi-monthly means month में एक दफा. ये m greater than 6 ये एक मैग्नीट्यूड है कि किस मैग्नीट्यूड का फ्लड आया है, ये बाद में आप खैर समझ जाएंगे. जस्ट हियर ड्राइंग द डेटा ऑन टू एक्सिस, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ. I'm interested to draw this data on the right side like this. These are small value, and this data in under the column D on the left side जिसमें बड़ी बड़ी वैल्यू मौजूद है. ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हैं comparatively these value are high. तो simple is that Excel by default picks the first column जो आप select करते हैं to the x axis. ये x axis पे draw करता है, आप change भी कर सकते हैं later on, but by default remember ये अभी जो मैंने selection की, Excel will pick the B column on x axis and this C and D on the y axis. ये selection हमने कर ली, and simply go to insert, and we are interested in line diagram. तो line diagram active क्यों नहीं हुआ? Let me check. ये मेरे नहीं, ये डेटा जो है आपका, ये स्मॉल डेटा यहाँ पे है, ये एनसो में. सो व्हाट यू विल डू,
select this column, and यहाँ पे ये column and this column. This 3 column I have selected because what has already been drawn, वो ये 2 column against the time period है. Now see, from different chart option here, the line option you can pick, उसको pick कर लें, simple वाला भी ले सकते हैं, and you can just pick it with some symbol. I'm just picking this simple one, and now you can see here the values. So I'm removing this chart title, and if I a little bit increase the size of the graph initially just to see the difference in the values, ये तो almost same size की नजर आ रही है, जो गलती तो नहीं हुई. अच्छा ये क्या शो कर रहा है? This is let me check first the value in this column. Okay, so what I'm doing now, the value which I want to transform to the right side, the blue line. Now the ENSO is these orange line, but you have to apply with double click, and after double click you can see the secondary axis. Click on secondary axis and it will create your right side axis. You can see now the right side axis has been generated. ये जो -2 से 3.5 तक available. So it means that now the data is to be read from x-axis dates corresponding to this right side axis for this we can say orange line, which is ENSO index. एक data है just for your example. So now you can see 2 ordinate value. एक left side पे है, left side for this total flood, and the right side ordinate is for this ENSO index, and both of the ordinate value has the common x-axis which are dates, कि किस डेट पे क्या इवेंट हैपन हो गया. उसी तरह का मैकअप आपने यहां पर भी करना है. थोड़ा सा अगर स्टार्ट में मैं ये कर लूं कि सेलेक्ट द आउटर साइड लाइन, गो टू होम, क्लिक ऑन दिस ब्लैक एंड व्हाइट, ताकि आपका टेक्स्ट जो है वो टाइम रोमन्स कर लें. If you are interested to leave this 10 size, okay, ग्राफ के लिए हमारा 10 भी है. If you want to increase 12 तक, okay, do it. जो भी suitable size है उस पे जाएं. यहाँ पे 10 ज्यादा सूट कर रहा है, इसलिए I will keep the size 10 and click on these lines, delete it. बाकी मेकअप मैंने आपको सिखा दी, but quickly I am just doing it, and just follow where I'm clicking, where I'm doing it. This ordinate value, this color line, and just I'm coming down to line solid, black हो गया. I'm just doing 1 and click on text option, tick marks, measure outside. Yes, I have got it, everything on the one ordinate. Click on the second ordinate. Okay, outside already here. Go to the color, go to the line solid कर लें, right, and increase the width, and similarly click on the x-axis, increase the width, line solid, change the color to black. Okay, you have got it for the x-axis. Click on the plus symbol, click on the axis title, and you have got the axis title. यहाँ पे x title क्या show कर रहा है? Events dates, for example. Event मेरा flood भी हो सकता है, ये ENSO भी हो सकता है, event dates. On the left side now, better to define कि आप left side पे कौन सा data है आपका. Total flood M greater than 4 जो आप show कर रहे हैं नीचे bi-monthly. So you have to title it, and the right title, click it, select it, ENSO, okay, index. You can write here, right? And for the legend, if you want to bring in a top, click on it, format,
and click on top. A little bit you can manually adjust to bring it down. Okay, click on one line, and so go to color, click on solid, reduce its size and make it smooth if you are interested, otherwise even it's okay. Second line, black and white करना है हमने. Reduce width, okay, color black, and change the joint type, line type, to make the difference between the two data, the two lines. So this is what you can do. Earlier I have just practiced how to change different axes, their data, or even I have shown you how to change the direction of this text. अब इस पे click करेंगे, you can make it vertical from here. Okay. For more visibility clarification, or if it's not more visible, आप उसको change कर सकते हैं. 270 पे उल्टा हो गया, right? 90 बिल्कुल दूसरे साइड पे उल्टा हो गया, and you can bring to horizontal if space allows you. In this case, different dates will be hidden. Okay, so if you want to see maximum dates, so vertical are 270 जो आपका वो है, you can change it accordingly. A vertical will be better, right? So this is what you can do by creating the two axes. कैसे मैंने कर लिया that? Sometime you want to change the data in opposite direction. जिस तरह मैं अगर इस axis पे click कर लूं and I want to reverse the value, means from bottom to up, ये negative से positive तक है, positive से मैं ऊपर से negative से positive की तरफ नीचे करना चाहता हूं. So that you can do, just click the axis or ordinate, ये इसको मैं करना, और यहाँ पे एक option है reverse value. ये देखिए value in reverse order. Click it and your direction of the reading the values from top to bottom. Previous one was okay without reverse, वो normal था. Click it again, so your value again will be drawn properly from negative to positive. ये reverse के साथ positive to negative हो जाएगा. Logarithmic में आप change कर सकते हैं यहाँ से, but in this specific case we don't need it in logarithmic form. ये logarithmic में इसने draw कर लिया. We are not interested here. So we are just interested in normal, and we can change in reverse, but also not interested in reverse. Okay? So this is what we can just practice, how to draw the two ordinates because of different data sizes. बड़ा data अगर साथ में draw कर लें तो आपने previous देख ला, वो एक दूसरे में से गायब हो जाते हैं. In this case we can very easily read the table from the values from this figure. Are there a difference from each other, right? और आपको show कर रहा है कि which line is actually showing what type of data, वो भी हमें visible हो जाएगा. Is it okay now, everyone? So far we are good? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's great. Yes, sir. Achha, now another technique I'm showing you, when you are doing calculation and there is an implicit function. Implicit का आपको पता है जिस तरह की एक factor है वो दोनों साइड पे है. Like you can see in this figure, f is available on both sides. Later on this equation will come across in your fluid mechanics. Fraction factor हम इसको कहते हैं. लेकिन just for example मैंने आपके लिए लिया है कि how to deal in Excel this kind of situation, कि अगर हमारे पास other data is available, then manually it will become very cumbersome job कि हम trial and error करेंगे कि what value of f should be put inside this equation so that both side becomes equal. तो बहुत ही cumbersome, आपने एक वैल्यू को चेक करना, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे. So there is like shortcut solution in Excel. You can find that value exactly within seconds. आपको वो ट्रायल एंड एरर से जान छूट जाएगी कि मैनुअल जो आप करेंगे. ये एक एक्सरसाइज मैंने की है, I'm repeating for demonstration purpose again. Let's see. We have this epsilon value available
ये एक रफनेस फैक्टर है, एक सरफेस को शो करता है कि एक सरफेस आपका कितना ऊपर है कितना नीचे है, अंडुलेशन सरफेस की शो करता है। डी आपका एक हाइड्रोलिक डायमीटर, बाद में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट आई एम गिविंग यू एक्सेल में कैलकुलेशन किस तरह करनी। आर ई रेनॉल्ड नंबर को बाद में पढ़ेंगे, यू माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन दीज, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड कि हमारे पास एप्सिलॉन वैल्यू है, डी है और आर ई की वैल्यू है, एंड वी are going to find the f value which is on both side। तो मैं अपनी आसानी के लिए क्या करूंगा कि ये टर्म भी मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर लूंगा, तो हियर व्हाट विल बी लेफ्ट? शाबाश। अगर मैं दोनों टर्म एक साइड पे शिफ्ट कर लूं तो मेरे पास क्या होगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 आ जाएगा। तो ये अपने लिए आसानी के लिए मैंने क्या किया, दिस टर्म हैज बीन शिफ्टेड टू द राइट साइड, तो ये हो जाएगा -1/f_रूट, तो यहां पे क्या रह जाएगा? 0। या इस टर्म को, राइट वाले टर्म को इस साइड पे शिफ्ट कर लें, इट विल बिकम +2 log एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्यों हम कर रहे हैं? इसलिए कि एक टारगेट इस इक्वेशन से हम अपने लिए 0 रख रहे हैं, जो यहां पे मैंने लिखा ऑब्जेक्टिव इज टू गेट अ 0 वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन। That we can do only if we shift the right side to left or the left side to right and equal it to 0। तो अपनी आसानी के लिए वो हमने कर लिया, ताकि this implicit function we have to deal with कि f की क्या वैल्यू रखें ताकि we can get it 0 on the other side। Okay, these are the given value। Okay, re की वैल्यू है, एप्सिलॉन की वैल्यू है, d की वैल्यू है, एंड यहां पे हमने इस इक्वेशन को एंटर करना है। किस तरह एंटर करना है? ताकि ये टर्म भी आइदर इट शिफ्ट टू द राइट और दिस टर्म शुड बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट। मैं दोबारा यहां पे जस्ट फॉर योर डेमोंस्ट्रेशन के इक्वल, मैं ये राइट साइड वाला लेफ्ट को शिफ्ट कर रहा हूं ताकि वी हैव इक्वल टू 0 ऑन द राइट साइड। करना मैंने क्या है, स्टार्ट आई एम जस्ट टेकिंग ब्रैकेट स्टार्ट 1 डिवाइडेड बाय, अब यहां पे है स्क्वायर रूट f। सो एक्सेल में एक बिल्ट इन फंक्शन है स्क्वायर रूट के लिए, SQRT। SQRT लिखें एंड ब्रैकेट स्टार्ट, और यहां पे चूंकि f की वैल्यू अभी मालूम ही नहीं है, तो रैंडमली फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट पुटिंग, इसके अबाउट जो सेल है मैंने इसको सेलेक्ट किया कि वो वैल्यू यहां पे आपने एक्सेल ने मुझे देनी है, लेकिन शुरू में मैं स्किप कर लेता हूं इसको, और ऊपर एक वैसे अपनी तरफ से एक वैल्यू लिख देते हैं। वैसे मैंने एक वैल्यू लिख दी, ये अभी ठीक वैल्यू नहीं है, दिस एक्सेल विल मेक दिस करेक्शन। सो आई एम स्टार्टिंग विद इक्वल, ये वो गिस वैल्यू है, ब्रैकेट स्टार्ट 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू जो हमने एज्यूम की है इसका रेफरेंस देना है, ब्रैकेट क्लोज and another bracket close because this 1 divided by f under square root is अपना term है। Then the right side term I have to shift to the left side, तो वो हो जाएगा प्लस में प्लस 2 log 10। so 2 log 10 एक्सेल में होगा 2 स्टेरिक, ये मल्टीप्लाई सिंबल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय log। when you are writing log तो यहां पे ऑप्शन आ जाते हैं, ये log base 10 है तो इसको क्लिक कर लें, and then bracket has been started। आप एक और ब्रैकेट भी डाल दें इसलिए कि हमारे साथ टर्म जरा ज्यादा है। सो एप्सिलॉन वैल्यू कहां पर है, उस सेल को रेफर कर लें, रेफर दैट वैल्यू डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू क्या है, उस सेल को रेफर कर लें, फिर डिवाइडेड बाय 3.7 है, फिर एक और डिवाइडेड बाय कर लें 3.7 जो कि आपके फार्मूले में है। ठीक है, ये आपका एक ब्रैकेट, जो मैंने दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट किया था वो इस एक टर्म के लिए जो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डी डिवाइड बाय 3.7, एक ब्रैकेट में इनसाइड द लॉग ये क्लोज हुआ, फिर प्लस अनदर ब्रैकेट स्टार्ट राइट 2.51 फार्मूला से मैं पिक कर रहा हूं, एंड देन डिवाइडेड बाय आर ई है, तो आर ई मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एफ है, तो आपने क्या करना है, यहां पे एक और ब्रैकेट स्टार्ट करना है, अदरवाइज योर फार्मूला विल बी देन रॉन्ग। एंड वेयर इज योर आर ई वैल्यू, क्लिक द सेल रेफरेंस B2 में है, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट
एफ क्या है? एफ की वैल्यू मैंने एक एज्यूम ली है यहां पे, सेल रेफर अगेन D5, ब्रैकेट क्लोज फॉर स्क्वायर रूट, ब्रैकेट क्लोज फॉर सेकंड टर्म ऑफ द लॉग एंड ब्रैकेट क्लोज फॉर, एंड आपको ये ब्रैकेट जो क्लोज करते जाएंगे आपको लेफ्ट साइड पे ऑटोमेटिकली वो शो करेगा कि कौन कितने ब्रैकेट आपने क्लोज करने हैं, वो खुद आपको एक्सेल शो कर रहा होता है। सो दिस आई हैव एंटर्ड। तो यहां पे हमारा टारगेट फंक्शन क्या है? 0। हमने इसको 0 लाना है, राइट? बट इन दिस स्पेसिफिक केस it has produced from a GIS value 0.013, the result is 4.775203. अब एक्सेल को मैंने एक कमांड के जरिए बताना है कि आई एम इंटरेस्टेड टू ब्रिंग दिस वैल्यू टू 0, तो उस 0 वैल्यू के लिए इस इक्वेशन से आपकी एफ की वैल्यू क्या होगी, जो कि दोनों साइड पे अवेलेबल है। एवरीबॉडी इज जस्ट गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन? हेलो गाइस, यस सर। आप फॉलो कर रहे हैं ना? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस फंक्शन इज टू ब्रिंग अ वैल्यू ऑफ 0, इसलिए कि मैंने राइट साइड को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लिया तो डेफिनेटली इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पस मैंने एक सेल में एक वैल्यू डाली, भले आप 0 भी डाल सकते थे, बट जस्ट टू रेफर दैट वैल्यू इन ड्यूरिंग पुटिंग द फार्मूला इन एक्सेल। अब कहां से हमने जाना है? डेटा पे क्लिक करें। When you click the data, follow me, I'm just going slowly. Come to the what if analysis, click here. And here is an option goal seek. Click on this goal seek and a window will open. Just I'm bring it here. तो ये आपको क्या शो कर है? सेट सेल। तो सेट कौन सा सेल है? ये सेल जिसमें फार्मूला है हमारा। हमने क्लिक कर लिया तो ये D6 ऑटोमेटिकली यहां पे आ गया। नहीं है, मैं इसको ब्लैंक करूं दोबारा। सेट सेल कौन सा? जिसमें फार्मूला है। टू वैल्यू, किस वैल्यू पे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा 0 है, 0 पे। 0 आपने मुझे रिजल्ट देना है। बाय चैलेंजिंग सेल, चैलेंजिंग का मतलब ये कि ये एफ की वैल्यू इसमें क्या होनी चाहिए ताकि ये वैल्यू 0 हो जाए। तो आई एम जस्ट क्लिकिंग चैलेंजिंग सेल, मेरा ये है जिसमें ये फ्रैक्शन फैक्टर होगा, ठीक है? एंड देन क्लिक ओके एंड इट विल स्टार्ट टू गिव यू द वैल्यू। आपको ये इक्वेशन से 0, ये 0.0000 समथिंग आ जाएगा आपको यहां पे, इसलिए वो साइंटिफिक फॉर्म में है। तो फॉर्म कहां से चेंज करना है? राइट क्लिक ऑन इट, कम टू फॉर्मेट सेल एंड यहां से ये जर्नल को ये नंबर में कर लें। तो नंबर में कर, वो जर्नल आपको साइंटिफिक फॉर्म में शो कर रहा था, नंबर में कर लेंगे ओके। तो इट इज एग्जैक्टली दैट 0.000 समथिंग आपको क्लोज लेके गया है। अगर आप ये डेसिमल पॉइंट इंक्रीज कर लें, यहां से गो टू होम एंड इंक्रीज द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम हियर, तो दिस इज 0.00000, वेरी क्लोज टू 0। वी कैन से अप्रोक्सीमेटली ये आपका 0.4 डेसिमल पॉइंट तक आपको ये वैल्यू दे रहा है। तो इसने हमें ये वैल्यू सेट करके दी कि वो जो आप बार बार करेंगे और कब पता नहीं आपसे सेट होगा, वो फ्रैक्शन फैक्टर की वैल्यू जस्ट टू 4 डेसिमल पॉइंट तक मैं लेके आता हूं, वो है 0.0572। ये इन्होंने आपको गोल सी के जरिए विद इन सेकंड जो है वो कर लिया। अच्छा, अब इसी इक्वेशन में नाउ योर रेनॉल्ड नंबर इज फॉर एग्जांपल चेंजिंग 10,000 हो गया, और आपका ये एप्सिलॉन भी 0.004 हो गया फॉर एग्जांपल। ये डी की वैल्यू भी आपकी फॉर एग्जांपल 0 पॉइंट समथिंग, कुछ बड़ी वैल्यू में ले रहा हूं, 0.25 हो गया। ये वैल्यू तो उसी तरह है। अब एटलीस्ट ये बाकी एक्सेल फार्मूले की तरह नहीं होगा कि आपने वंस फार्मूला एंटर कर लिया और देन यू विल बी चेंजिंग वैल्यू एंड ऑटोमेटिकली फार्मूला विल बी वर्केबल। इन दिस स्पेसिफिक केस you have to go back and you have to run the goal seek command again. It will find for this condition now, आपकी कंडीशन चेंज हो गई तो गोल सीक दोबारा चलाना होगा so that it can give us the proper f value now for these changed r e epsilon and d value. तो मैंने करना क्या है? I will go back again to data, what if analysis, goal seek and set cell
सेट सेल जो फार्मूला जिसमें है ऑलरेडी ये क्लिक है हमारे प्रीवियस, उसको क्लिक कर लें। टू वैल्यू ऑब्जेक्टिव हमारा है 0 करना है इसको। बाय चैलेंजिंग सेल क्या है, और बाय चेंजिंग सेल और चैलेंजिंग सेल वो ये है फ्रैक्शन फैक्टर वाला सेल जो हम यहां पे पिछले कैलकुलेशन का बना हुआ है। अब इस इन वैल्यू के लिए इसने हमें दूसरी वैल्यू फिट वैल्यू देनी है। ये जब आपने कर लिया ओके एंड इट विल डू योर कैलकुलेशन। तो अब नया इन कंडीशन के लिए आपका फ्रैक्शन फैक्टर 0.0332 जो कि मैनुअल आप करेंगे तो दैट विल टेक टाइम। आप पता नहीं कितने ट्रायल करेंगे और ये होगा। सो गोलसीक हैज सॉल्व्ड योर दैट जॉब इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही इजी अप्रोच है विद द हेल्प ऑफ गोलसीक। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने डिमॉन्स्ट्रेट की और यहां पे हुई है। अब यहां पे भी मैं दोबारा चलाता हूं आपकी ये चेंज डेटा के लिए, ये प्रीवियस डेटा के लिए था। व्हाट इफ एनालिसिस ये कहां से है, डेटा से व्हाट इफ एनालिसिस, देन गोलसीक, एंड देन यू आर पुटिंग द सेल जिसमें इक्वेशन आपने एंटर किया है, दैट शुड बी हियर। सेट द वैल्यू, ऑब्जेक्टिव आपकी क्या है, आई एम इंटरेस्टेड इन 0। बाय चेंजिंग सेल और चैलेंजिंग सेल कौन सा है, वो ये वाला सेल है जिस we are interested to find for these new setup of value the fraction factor. Okay, it will do the calculation and it will give you the sorry मैंने okay नहीं किया। apply goalseek, set the cell in which this formula cell to 0 by changing or challenging this fraction factor cell in okay, and then again okay, and better to bring this to 3 or 4 decimal. Okay, so it will give you new value for the fraction factor and will let you not burden with the maximum trial and error. तो इसने आपको करा के दिया। Is it okay? बाज़ औक़ात आपके साथ इक्वेशन होता है, उसका राइट साइड जो है आपको गिवन है, लेफ्ट साइड पे एक वैल्यू के लिए आपने ट्रायल एंड एरर करने होते, दैट यू विल डू आल्सो। अगर आपके पास ऑलरेडी राइट साइड पे एक वैल्यू सेट है जो कि हमने यहाँ पे 0 सेट कर दिया, तो दैट कैलकुलेशन यू कैन डू इन गोलसीक, बड़ी क्विकली आपके लिए कैलकुलेशन कर देगा। राइट, इजी। यस सर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट वी कैन डू इन एक्सेल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आपके पास एक तो हम फार्मूला से करते हैं लाइक सर बस इतना काफी है। नहीं, ये लास्ट पे हम जा रहे हैं, इतना काफी नहीं। एक्सेल आज की क्लास में खत्म, हमारे पास टाइम इतना नहीं है, हम नेक्स्ट में पावर पॉइंट करना है, फिर आप लोगों की प्रेजेंटेशन भी होंगी, फिर हमारे पास क्लासेस नहीं है। लेट मी फिनिश दिस पार्ट व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिनिश द एक्सेल टुडे। अच्छा, व्हेन यू मेक डिफरेंट टेबल्स इन एक्सेल, तो यहाँ पे पूरी मैकअप करके आप इसको वर्ड वगैरह में जाके सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट ओपनिंग अ वर्ड फाइल। चलो, ये वर्ड वाला शायद मैंने आपको पहले बताया भी है, हम ये एक्सेल वाला पहले खत्म कर देते हैं। ये एक क्लिक यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे मैं कुछ फार्मूलाज अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इट्स बिल्ट इन फंक्शन इन एक्सेल। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम जस्ट कॉपिंग दिस डेटा and I'm opening a new sheet, ये यहाँ पे already है, and pasting this data. Okay, just making adjustment of the columns, थोड़ा सा setting it. Okay, now if somebody is interested to find what will be the Peshawar data for different months, the mean, median, mode, skewness, standard deviation, and all these, what we can do manual formulas entering in Excel. Ye descriptive statistic is possible in Excel with one command. Click the data, go to this data analysis. मैंने आपको बताया था कि data analysis if not available in your Excel किस तरह लेके आना है, previous class में मैंने आपको बताया था। Click on data analysis and wait for a while. And here is a list of different function Excel can do for you. And if you go down, you will see descriptive statistics somewhere, like here, descriptive statistic. Okay,
अब ये आपसे इनपुट रेंज पूछ रहा है, what is the input range for what you are interested for these type of statistic. For example, I'm just interested in Peshawar data. मैं इसको ये data दे रहा हूँ, and click on label in first row, इसलिए कि Peshawar first row है, and come down and click on summary statistic. And at the same time, it's asking you where should be your output. Click on output and just tell him, give me the output in from here. कि मैंने G1 में click कर लिया, and click OK. And you will see for Peshawar, all statistic will be available. Mean of this data in this B column, whatever you have entered the 12 months data, for 12 months, the mean is this, the standard error is this, median, mode, standard deviation, sample variance, curvature, skewness, range, minimum, maximum, sum, count, data count, all these statistics are available. If at a time you are interested in all, I'm deleting it, go to data analysis, click descriptive statistic, OK, and input range, instead of this one column, select all columns for which you are interested to find these statistics. 4 column मैंने कर लिया instead of that one column जिसमें Peshawar, Islamabad, Lahore, Karachi. And click labels in first row, and then click on the output range. The first cell show it, start the result from this cell. And यहाँ पे click on the summary if this is unchecked. Check on the summary and OK. It will produce statistic of all columns. आप देख सकते हैं Peshawar का यहाँ पे, this is for Peshawar statistic, this is for the Islamabad statistic. You can make the cells size a little bit change, थोड़ा सा adjust कर लें इसको. ये आपको, you can make it in tabular form from home for like to make it good, and you can even select it to drag it up. एक cell ऊपर कर लें ताकि it can come in front of the previous data. So you will have now all statistic for Peshawar in the second column, all statistic with their name in for Islamabad, Lahore, and Karachi. So this is very easy, like you can do in statistic built-in command. Manual की जगह आपको descriptive statistic are available like this type from the data analysis, right? You have a lot of others. Regression भी आप कर सकते हैं, इसमें different test कर सकते हैं, शायद जो आपकी अभी इस वक्त नहीं, आप कुछ diagram भी histogram यहाँ पे show कर रहे हैं. You can draw input range आपका क्या है, you are interested here, labels, output, where you are interested in here, and click on what type of diagram you need, and OK. Sorry. ये input range contains non-numeric data. Okay. इसमें वो numeric को avoid करना है, so we will just select the numeric data. And OK. See, this will give you statistic about based on some like rules. वहाँ पे Pareto एक rule है, तो ये अभी आपके उसकी नहीं है. You can later on do it कि क्या frequency होगी particular type of data set, और इसमें different type of other terminologies आएंगी, but they are not of your interest for the time being. ये descriptive statistic ही आपके लिए it's okay for the timing, तो वो मैंने आपको यहाँ से करा के दे दिया. Okay, the last one, the last function, आपको एक assignment भी फिर आएगी. ये मैं आपको एक grade calculate कर रहा हूँ एक दो command से आपकी class की. For example, this is your class. I have entered the student name and I have randomly entered the obtained marks out of 100. मैंने table में show किया हुआ है. And this grade is now to be calculated with the help of a formula. ये देखिए मैं इस पे कर रहा हूँ now. It's not visible. मैंने hide किया हुआ है. कहाँ से hide किया हुआ? I will also show protection of the sheet. किस तरह एक sheet को आपने protect करना है. That I have done from here, format, and here is unprotect sheet. मैंने पहले से protect किया. Click on the unprotect, and then the password you have applied on it
आप अपना करेंगे अपनी शीट के लिए। मैंने अभी ओपन किया था, नाउ द फार्मूला इज विजिबल। जस्ट वन स्टेप अगर आपको समझ आ जाए, देन दिस इन कंटिन्यूएशन फार्मूला लार्ज है, बट दिस विल बी इन कंटिन्यूएशन, यू विल डू इट अगेन एंड अगेन। फॉर दैट प्रोस्पेक्टस में आपका डिफाइन है कि आपका ए ग्रेड कब होगा, ए नेगेटिव कब होगा, बी प्लस कब होगा, बी कब होगा, एंड सो ऑन अप टू एफ। तो वो प्रोस्पेक्टस के रूल के मुताबिक मैंने गाइडलाइन पिक कर ली है कि 96 एंड अबव विल गिव यू ए ग्रेड, 91 एंड अबव ए माइनस ग्रेड, 86 एंड अबव विल गिव यू बी प्लस। एंड अबव का मतलब ये कि ऊपर वाले रेंज के दरमियान, 91 एंड 96 के दरमियान ये आपको ए नेगेटिव देगा, लेकिन 96 से 100 तक ये आपको ए देगा और उसके करस्पॉन्डिंग जीपीए 4 होगा। तो ये दीज आर द प्रोस्पेक्टस गाइडलाइन। अब इसको मैं थ्रू एक्सेल फार्मूला कैलकुलेट कर लूं। ठीक है, दोबारा मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए इसको साइड पे कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए व्हाट आई एम डूइंग अंडर ग्रेड। अगर मैं इसको भी साथ में अगर शिफ्ट कर लूं, पेस्ट कर लिया मैंने, एंड दिस आई एम एंटरिंग हियर लाइक ए फार्मूला ऑलरेडी आई हैव एंटर्ड हियर। आप थोड़ा सा मुझे फॉलो कर लें क्विकली। आई एम राइटिंग इक्वल एफ, ये एफ कमांड है, ब्रैकेट स्टार्ट, एंड देन क्लिक ऑन द नंबर और योर ऑब्टेन मार्क्स। उस सेल पे क्लिक करना है, वैल्यू नहीं लिखना, उस सेल रेफरेंस पे देखना है। आप उसको ये लिखें इफ C3 जिसमें वैल्यू है C3 इज इक्वल टू, आपको क्या यहां पे एक कमांड मैंने अप्लाई किया है कि इफ दिस C3 इज इक्वल टू डबल कॉमा एंड देन डबल कॉमा, इसका मतलब ये खाली, एम्प्टी। सो आई एम रिपीटिंग दैट कमांड, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू, शिफ्ट ये डबल कॉमा 2 लगाए, इसका मतलब कि अगर ये सेल खाली हुआ तो कॉमा इसको एम्प्टी ही शो करे, इसका मतलब ये है। आई एम टेलिंग द एक्सेल इफ C3 हैज नथिंग देन शो दिस फार्मूला बेस नेक्स्ट सेल इज एम्प्टी, मुझे खाली सेल दे दो, कॉमा एफ अगेन। अब एक बड़ा लूप मैंने स्टार्ट करना है, अगर वो खाली नहीं है तो क्या है, अगेन आई विल क्लिक C3 जिसमें आपकी वैल्यू है, C3 इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 96। वो मैंने अगर यहां से नहीं करना तो आई विल डू इट फ्रॉम वेयर, क्लिक हियर। मैं इसको बता रहा हूं कि इफ C3 इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन M4, तो M4 में क्या है, 96 है, मैंने उसका रेफरेंस दिया और उसको फंक्शन F4 से फिक्स कर दिया। तो फिर क्या देना है मुझे, आपने मुझे ग्रेड ए देना है जो कि यहां पे टेबल है, और इसको भी फंक्शन F4 से फिक्स कर दो। अब इस लूप को चलाते जाएं, ठीक है, कॉमा एफ अगेन एंड अगेन C3 इक्वल टू और ग्रेटर देन, नेक्स्ट बताए इसको 91 एक सेल में है, उसका रेफरेंस दे और फिक्स कर लें, कॉमा ग्रेड आपने फिर कौन सा मुझे देना है, ए नेगेटिव, किस सेल में है वो रेफर कर लें, एंड फंक्शन F4 से उसको फिक्स कर लें, एंड ये कंटिन्यूएशन में चलता जाएगा। एफ अगेन कॉमा के बाद C3, एक सेल में आपने ये करना है, ये फार्मूला बाकी सेल में ड्रैग करना है, खुद ग्रेड कैलकुलेट। इफ C3 नेक्स्ट हमारा इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 96, जो कि एक सेल में मैंने वो रेफर किया और इसको फिक्स किया, कॉमा, तो फिर आपने मुझे बी प्लस देना है, उस सेल को फिक्स कर दो जिसमें बी प्लस हमने लिखा है, कॉमा अगेन एफ लूप स्टार्ट कर लो। ये कंटिन्यूएशन में C3 में मैनुअल भी लिख सकता हूं, इक्वल टू ग्रेटर देन, नेक्स्ट हमारा 81 जहां पे लिखा है उसको रेफर कर लो और फिक्स कर लो, कॉमा, और उसके साथ ग्रेड मुझे ये देना है और उसको फिक्स कर दो, अगेन कॉमा, स्टार्ट अनदर लूप एफ C3 is equal to, C3 में यहाँ पे मेरे मार्क्स है, उसको अगेन आई एम रेफरिंग, ये है फिक्स इट फ्रॉम कीबोर्ड, कॉमा, तो मुझे ग्रेड फिर भी माइनस देना है, एंड फिक्स इट, कॉमा अगेन एफ लूप स्टार्ट कर लो, C3
इक्वल टू ग्रेटर देन 66 वाला नेक्स्ट आता है, फिक्स कर लें फ्रॉम योर कीबोर्ड F4 फंक्शन से या फंक्शन F4 कॉमा, उसके अगेंस्ट मुझे ग्रेड देना है C, फंक्शन F4 से फिक्स कॉमा, अगेन F लूप स्टार्ट, C3 इक्वल टू ग्रेटर देन 61 वाला सेल, फिक्स इट कॉमा, उसके अगेंस्ट ग्रेड नेगेटिव, फिक्स इट, अगेन F लूप स्टार्ट, C3 इक्वल टू और ग्रेटर देन, नेक्स्ट हमारा 56 वाला है, फंक्शन F4 से फिक्स कर लें कॉमा, सेलेक्ट इट्स करस्पॉन्डिंग ग्रेड यहाँ पे लिखा है और फिक्स इट कॉमा, अगेन इफ C3 इक्वल टू ग्रेटर देन, नेक्स्ट 50 आ जाएगा, फंक्शन F4 से फिक्स कर लें कॉमा, ग्रेड इसके करस्पॉन्डिंग D, फंक्शन F4 से फिक्स कर लें, इफ C3 इज लेस देन, अब हमने देना है, यहाँ पे कंडीशन है C3 इज लेस देन 50, तो चूंकि यहाँ पे एक इसके साथ एक ऑप्शन लगा हुआ है, लेट मी चेक ये इसके साथ काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो मैंने यहाँ पे मैनुअल लेस देन वाला सिंबल लगाना है 50, बजाय इसके कि उसका अगर मैं ऑप्शन वहां से दे दूं वो सिंबल के साथ पिक नहीं करेगा, सो आई विल C3 लेस देन 50 देन कॉमा, F ग्रेड आपने देना है एंड फिक्स इट, ठीक है, एंड क्लोज द वन। अब जब क्लोज करते जाएंगे तो ऊपर आपको कलर नजर आएंगे कि कितने ब्रैकेट आपने क्लोज करने, वो खुद आपके साथ चलता जाएगा। आप देखें, यू कैन फॉलो इन द शीट, वो मेरे साथ कलर जा रहे हैं कि मैंने कितने क्लोज करने हैं। लास्ट वाला क्लोज ये कलर वाइज उसने मुझे खुद बताया, एंटर। अच्छा, इस तरह जब आ जाए इट मींस देयर इज सम एरर इन माय फार्मूला, तो वो एरर को हमने फिर आइडेंटिफाई करना है कि कहां पे एरर हुआ है। C3 is greater than and equal to M4, ये मैंने लेट मी चेक फार्मूला मैंने अपोजिट तो नहीं लगाया, नहीं ठीक लगाया है मैंने, पूरा फार्मूला यहां से कॉपी कर रहा हूं, जो कि मैंने वहां पे जिस तरह प्रैक्टिस कर लिया, फार्मूला मैंने दोबारा सिर्फ यहां पे पेस्ट कर लिया, विजिबल नहीं है ये फार्मूला, वही जो अभी मैंने F कमांड से वो स्टार्ट किया, ठीक है, द सेम इज अवेलेबल है। अच्छा, ये तो ग्रेडिंग वाला, सॉरी, ये वाला, कॉपी एंड पेस्ट विद फंक्शन, यहां पे मैं पेस्ट विद फंक्शन कर रहा हूं। अब ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जो एरर ये G3 दे रहा है, G3 ये इसलिए दे रहा है कि वहां पे जो फंक्शन बना है मैंने D में लिखा है तो वो C को पिक कर रहा है, तो यहाँ पे ये आपने मैंने पेस्ट किया वही फार्मूला जो अभी मैंने वहां पे उड़ गया, आप वो कुछ एरर की वजह से C3 मैंने वही करनी जिस तरह मैं गो थ्रू कर चुका हूं। यहाँ से सिंपल आई एम जस्ट कॉपिंग C3 एंड पेस्टिंग इन ऑल, C3 को कॉपी कर लें, जहाँ पे G3 है उसको C3 कर लें, ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ G3 की जगह C3, ताकि मेरा फार्मूला उसी पे अप्लाई हो पिछला, या मैनुअल आप GG को CC कर लें, इट विल बी क्विक। मैं यहाँ पे C3 पेस्ट कर रहा हूँ, ओके, इट्स एट व्हाट वी हैव। हाँ, उसमें एरर इसलिए आ रहा था, एट द एंड अगेन ऑफ कॉमा के बाद हमने डबल कॉमा लगाना है, वो पिछला एरर इसलिए आया, ये कॉमा मैं भूल गया था, एंड देन एंटर,
इट विल कैलकुलेट योर ग्रेड, लेकिन यहाँ पे हाइड है फॉर्मेटिंग की वजह से, ये सेल फार्मूले में फर्स्ट पॉइंट जी है सर, आपने चेंज नहीं किया। सी मैंने कर लिया ना, फर्स्ट पॉइंट एफ के बाद जो है वो जी है। ओके दैट्स गुड, दैट्स नाइस। अच्छा, इसी वजह से आ रहा था कि इस शुरू में जो मैं आपको बता रहा कि अगर यहाँ पे एम्प्टी हो तो G3 चूंकि एम्प्टी था तो उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। वो कमांड हमने स्टार्ट में दिया है कि इफ यू आर the cell which you are referring, if that is empty then give me empty, मुझे कुछ भी नहीं देना, उसको empty देना, इसलिए वो प्रीवियस में वो एरर था। थैंक यू फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये देखें अब इसका फायदा हमें क्या होगा, एक सेल में हमने कर लिया, फॉर द रेस्ट ऑफ दीज मार्क्स इट विल डू दिस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दीज टू कॉलम गाइडलाइन। मैंने ये दो गाइडलाइन पिक कर ली है, थोड़ा टाइम लगेगा हमें, लेकिन फिर आसानी क्या होगी, जस्ट क्लिक इट and drag it. It will do your calculation based on this criteria कि आपके मार्क्स कितने से कितने तक हो और आपको क्या ग्रेड मिलेगा। This has done your calculation. तो आप दूसरे ये ग्रेडिंग के लिए मैंने किया, you can do these kind of like exercises for other calculation. अब कोई और वैल्यू आपको किसी और किस्म की कैलकुलेशन है and they are a kind of like similar to this calculation that you can do. अच्छा, जीपीए अब किस तरह मैंने कलेक्ट करना है, उसके लिए शॉर्ट फार्मूला है, इतना टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। उसके लिए सिंपल एक वी लुकअप वाला फार्मूला है। हमने इस ग्रेडिंग के करेस्पॉन्डिंग जो है, जो कि डी कॉलम में हमने किया है, वी लुकअप फार्मूला से इस डी कॉलम में देखना है हमने यहां पे इस पूरे दो उस कॉलम में कि अगर A है तो आपने 4 किस तरह पिक करना है, अगर A नेगेटिव है तो 3.6 आपने किस तरह पिक करना है, इसलिए कि ये मल्टीपल हो सकते हैं फॉर डिफरेंट स्टूडेंट। अब 4 स्टूडेंट के A हो सकते हैं, 4 स्टूडेंट के A नेगेटिव हो सकते हैं, 4 स्टूडेंट फेल हो सकते हैं। सो हाउ टू पिक विद द हेल्प ऑफ दिस वी लुकअप फार्मूला। यहाँ पे मैंने एक शीट डेवलप की है वी लुकअप की मैं इसको दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। इफ आई हैव गॉट सम एरर आई विल टेक हेल्प अगेन फ्रॉम माय बिल्ट इन शीट। इक्वल, अच्छा एक चीज का ख्याल रखना है, दिस वी लुकअप आई एम स्टार्टिंग विद एफ। वी लुकअप अपना करेगा, लेकिन एफ क्यों कर रहा हूं, इफ फॉर एग्जांपल देयर इज नो ग्रेड इन दिस फिगर, लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये 90 को डिलीट कर रहा हूं तो इट विल शो यू नो ग्रेड, बिकॉज वहां पे सेल जो मैंने रेफर किया है और मैंने थ्रू कमांड वहां पे बताया कि FC3 इज एम्प्टी, ये डबल कॉमा जो मैंने रखा ये एम्प्टी शो कर, देन आफ्टर कॉमा देन शो मी एम्प्टी, इसका ये मतलब है। तो ये इसलिए यहां पे एम्प्टी आया, तो F से हम वहां पर भी स्टार्ट ले रहे हैं ताकि हम उसके मुताबिक जो है इसको की बताएं कि अगर ग्रेड खाली है, देयर इज नो ग्रेड, देन आल्सो गिव मी ब्लैंक सेल। सो इक्वल F if this H3 is equal to blank with double comma, ये डबल कॉमा होता है ब्लैंक के लिए, कॉमा तो मुझे आपने ब्लैंक ही देना है। इसका ये मतलब है कि if H3 is equal to blank then कॉमा मुझे ब्लैंक दे दो, अदरवाइज एक और कॉमा दे दो, ब्रैकेट स्टार्ट वी लुकअप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया, क्लिक। अब खुद ही ये आपको गाइड कर रहा है लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू को आपने लुकअप करना है, मैंने कहना ये B, ये H3 को, कॉमा वो मुझे गाइड कर रहा है। नेक्स्ट वो बता रहे टेबल एरे, सो टेबल एरे इन माय केस इज फ्रॉम हियर, आपका इस N4 से स्टार्ट है और यहां तक O11 तक जा रहा है, ये N और O11 तक वो जा रहा है, ठीक है। तो ये एरे मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन इसको फिक्स करना है, वी हैव टू फिक्स इट, ये ऑल वैल्यूज इट हैज टू सर्च विद इन दिस रेंज, देन कॉमा। आपको वो बता रहा है कि ये H के करस्पॉन्डिंग जो ग्रेड है, ये ग्रेड पहले आपने सर्च करना है यहां पे ये ग्रेडिंग क्राइटेरिया में, और उस ग्रेड के करस्पॉन्डिंग आपने नेक्स्ट कॉलम से उसकी जीपीए को पिक करना है। तो मैंने इसको बताना है कि उसके सेकंड कॉलम से आपने जीपीए को उठाना है। तो मैंने 2 लिखा, इंडेक्स नंबर मेरा 2 है यहां पे, जिससे मैंने वैल्यू पिक करनी है, मींस सेकंड कॉलम ऑफ द सेलेक्टेड रेंज,
ठीक है, एंड देन कॉमा, ये आपको बता रहा है कि अप्रोक्सीमेट मैच आपको चाहिए या एग्जैक्ट, तो मैं कह रहा हूं एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट के लिए आप फॉल्स अगर मैनुअली लिखते हैं या यहां से क्लिक कर लें, एंड ब्रैकेट क्लोज and next bracket close and next bracket close, because 3 left sides start and 3 will close and enter. So it will pick the value with the help of this VLOOKUP command from this guideline के B plus जहां पर भी आएगा और ये आप ड्रैग कर लें फार्मूला, उसके मुताबिक ये 3.3 जो है VLOOKUP कमांड से पिक कर लेगा. I'm just copying this formula with double click, तो इसके करस्पॉन्डिंग इस टेबल से 2 decimal point तक बनाए इसको, उस टेबल से इसने वैल्यू पिक कर लिया. सो दिस इज लाइक अ वेरी इफेक्टिव रोल ऑफ द VLOOKUP कमांड एज वेल एज द F कमांड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ठीक, अब आपका काम, आपको असाइनमेंट ये मिलेगी, यही शीट आपको या अपना शीट आप डेवलप करेंगे ये, ताकि हमें लगे कि हर एक की अपनी जो एक्सरसाइज है और वो आपने की चुके हैं, थोड़ा सा मेकअप भी करना है. You have to give me, using this F command in Excel, to identify who is the topper, who is the second position holder, and who is the third position holder. आपने शो करना है F command के जरिए फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, ताकि आप एक फार्मूला यहां पे अप्लाई कर रहे हैं उसको ड्रैग कर लें, ये आउट ऑफ लाइक दीज मार्क्स आपको राइट साइड पे सिर्फ 3 बता दें, first, second and third, and the rest of the rows should be blank. So that will be your possible assignment in this sheet. एक और sheet के लिए ग्राफ का मैं एक लगा रहा हूं, तो ये assignment आपके 2 पार्ट होगा. One part will be developing a graph in Excel, and the other part will be to identify the topper, the second position holder, and the third position holder, and this we can say sheet, right? Everybody's okay? Yes, sir. Yes, sir. Any questions so far? Okay, the class was lengthy a bit, but might be you have got very much information from this class, or you have learned a lot. Some of you might have some experiences, and others might be very new for this class or for this kind of like calculation. So that might have a good opportunity to learn how can we utilize Excel in our studies. If you have any question, I can entertain. Otherwise, I have to stop recording and then call your attendance. Any question from anyone, please? No question, sir, but please kindly share this video with us, sir. This is why we have just started recording, वो sharing के लिए, वरना हमारा क्या काम था फिर.